इसी तरह से बोनस शेयर के ऊपर 10% ये उन्होंने लगा दिया है विदहोल्डिंग टैक्स। और बाकी रिटेलर्स के उन्होंने रिलीफ दे दिया है कि भाई जो स्क्वायर यार्ड की स्क्वायर फुट की कंडीशन थी शॉप्स पे वो हटा दिया है। ठीक है। और बाकी इसी तरह से इन्होंने जो है टेक्सटाइल के ऊपर 12% से 15% उनका सेल्स टैक्स का रेट कर दिया। और भी काफी सारी चेंजेस उन्होंने करी हैं। बड़ा जबरदस्त बजट इस बार बनाया है। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आसिफ कसबाती, जो कि एफ सी ए में और LLB हैं, और उनका 30 साल से जायद का तजुर्बा है, और गवर्नमेंट की वेरियस कमिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं ICAP उसके मेंबर हैं ये। ठीक है। तो ओवर टू मिस्टर आसिफ कसबाती, जो कि सारी डिटेल में इन बजट के टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो हर टॉपिक के ऊपर और हर सेक्टोरल एनालिसिस के हिसाब से ये आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो ओवर टू मिस्टर आसिफ कसबाती। अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद है कि सेल्स टैक्स ऑन रिटेलर एट लार्ज को बहुत बड़ा रिलीफ इस बजट के जरिए मिला है। और इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान और दीगर एसोसिएशंस ने कोशिश की, खुसूसन अंजुमन ताजरान ने बड़ी कोशिश की इस बात की कि इस लॉ को तब्दील कराया जाए, स्क्वायर फुटेज को तब्दील कराया जाए। और हमने चूंकि ज्वेलर्स एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन की कसबाती कंपनी ने, और हमारे साथ जो है वो अंजुमन ताजरान भी वहाँ मौजूद थे, और जो उनकी प्रेजेंटेशन है वी अप्रिशिएट देयर प्रेजेंटेशन एज वेल, कि उन्होंने भी कोशिश की इन एडिशन टू अस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के स्क्वायर फुट लिमिट जो है वो हटाई जाए। और फर्नीचर वाले भी अकॉर्डिंगली उनको भी कामयाबी हुई, और बाकी लोगों को भी स्क्वायर फुट के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाबी हुई। तो अकॉर्डिंगली जो अपने 1000 स्क्वायर फुट वाले जितने भी रिटेलर्स हैं, अदर देन फर्नीचर शॉप जिसकी 2000 की लिमिट है, और ज्वेलरी जिसकी 300 स्क्वायर फुट की लिमिट है, बाकी लोगों के लिए 1000 की लिमिट है। तो जिन लोगों की 1000 से की लिमिट या उससे ज़्यादा की लिमिट की शॉप्स थी, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस रिजीम से बाहर आ गए हैं टीयर 1 से। और टीयर 1 के बाद अब जाहिर है वो नॉन टीयर सिचुएशन में जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके को वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब खुशी मनाएं इस बात की। लेकिन इनके लिए भी दो मसले अपनी जगह पेंडिंग रहेंगे कि एक तो ये लॉ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल होगा अगर बिल पास हो जाता है जुलाई 1 2023 से एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली जून 30 2023 तक इनका मसला अभी रहेगा अपनी जगह पे, और उसको भी रिजॉल्व करने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और हम भी इस बात की कोशिश कर सकते हैं इफ somebody engaged us well in a proper manner। तो इसी तरह से ताकि पिछले साल का मसला इफेक्टिवली जो अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, तकरीबन रफली स्पीकिंग अबाउट 2-3 वीक्स बाकी रह गए, वो भी मसला उनका हल हो जाए। और इसके अलावा लीगल कुछ लोगों को नोटिस के अलावा लीगल अपने वो कोर्ट्स में भी जाने की उन्होंने कोशिश की है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो वो भी मजीद इसको स्पीड अप कर सकते हैं मैटर को, ताकि जल्द अज जल्द लीगल पोजीशन उनके फेवर में आ जाए। और अगर कोई इस सिलसिले में कोई पिटीशन फाइल करना चाह रहा है तो वी कैन हेल्प देम इन दिस मैनर टू ब्रीफ टू देयर ओन लॉयर एंड एडवोकेट, और मे बी वी कैन एंगेज our related lawyers to bring and try our level best to get the best possible order. With these words, thank you very much, and again good luck to all the retailers who are above 1000 square foot area. Thank you very much, and Allah Hafiz. Take care. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज चूंकि सबको पता है कि बजट आया है, ठीक है, बजट में बहुत मेजर चेंजेस आई हैं, खास तौर पे विदहोल्डिंग टैक्स की चीज़ें, और रिटेलर्स के हवाले से, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सुपर टैक्स के हवाले से। तो हमारे साथ अभी मौजूद है मिस्टर आसिफ कसबाती, जो कि FCA, FCMA और LLB हैं, ठीक है, और आई कैप इनडायरेक्ट टैक्स के टास्क फोर्स कन्वेनर हैं, RRMC हार्मोनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब ग्रुप के मेंबर हैं, SRB के ADRC पैनल मेंबर हैं, और उनकी टैक्स के बारे में तकरीबन 35 साल का उनका तजुर्बा है, ठीक है। तो उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियोस की सीरीज पूरी बनाई है इस बजट के हवाले से, तो वो हम अपलोड करते रहेंगे। अब बस अभी अपलोड होने वाली है इसी के साथ। नाउ ओवर टू मिस्टर आसिफ कसबाती। अहम चेंजेस विदहोल्डिंग टैक्स के सिलसिले में आई हैं, और ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने आसान समझा है कि इस एरिया में चूँकि ये रेट लेना इजी होता है और विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बहुत सारे हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं कि अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम में ले जाएं और फिर इनडायरेक्टली वो मिनिमम टैक्स बढ़ जाए, एंड व्हेन वी से कि मिनिमम टैक्स बढ़ जाएगा, तो वैसे तो ये डायरेक्ट टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी कॉस्ट जनरली पास ऑन हो जाती है, और उस पास ऑन के नतीजे में बेचारा कंज्यूमर, स्पेशली सैलरीड पर्सन, भुगतता है जहाँ जहाँ मसला हो। इसके अलावा जाहिर है जो कंपनी एक्विजिशन कंपनी होती है, जो सर्विसेज को एक्वायर करती है, ये गुड्स को एक्वायर करती है, वो उसको अल्टीमेटली फेस करना पड़ता है। ऑल्दो विदहोल्डिंग टैक्स इन रियल सेंस इनकम टैक्स है, और जो रेलेवेंट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज या प्रोवाइडर सेलर ऑफ गुड्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हुआ ये है असल में अलमिया कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्विसेज हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1%, कि पहले वो इंडिविजुअल और EOB की पी के ऊपर 10% था, वो बढ़ा के 11% कर दिया गया है। कंपनीज के ऊपर 8% था, वो बढ़ा के 9% कर दिया गया है। और स्पेसिफाइड सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग है, लाइक आउटसोर्सिंग सर्विसेज है, इसके ऊपर ओरिजिनली 2% था, वो बढ़ा के 3 हो गया, बढ़ा के 4 हो गया। और एक दफ़ा अम्ब्रेला में स्पेसिफाइड सेक्टर को भी ले आए, हालांकि वहाँ मार्जिन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज है जो इफेक्टिवली पहले जनरल रेट पे थी, फिर इसके बाद उनको 3% पे लाया गया और अब 4% कर दिया गया। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनका रेट इसी तरह से बढ़ गया। तो बहुत सारी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, तकरीबन 20 के करीब, उनके ऊपर 3% रेट था, वो बढ़ा के 4% कर दिया गया। तो इफेक्टिवली ये तमाम चीज़ें इन्फ्लेशन के डायरेक्शन में ले जाएंगी, और जो तबाहकुन इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा मजीद। इसी तरह से गुड्स के सिलसिले में रेट जो है वो 4.5% था, उसको बढ़ा के 5.5% कर दिया गया इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP, और कंपनीज के केस में अब नया रेट 5% होगा। और जाहिर है हम सपोर्ट नहीं कर रहे नॉन ATL वालों को, लेकिन नॉन ATL वालों में यही रेट डबल हो जाएगा। इसी तरह से विदहोल्डिंग टैक्स का बोनस शेयर्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये PSX के लिहाज से बात करें तो बैड न्यूज़ है, और अगर बात करें कि ये 10% इफेक्टिवली विदहोल्डिंग भी है और फिर यही फाइनल टैक्स हो जाएगा, तो इन अ वे इट्स अ गुड न्यूज़ के फाइनल टैक्स हो जाएगा, लेकिन इन अ वे बैड न्यूज़ के जो टैक्स बाद में लगना था एट द सेल स्टेज, वो अब पहले से ही लग जाएगा। और ये इंडिकेशन मिल रही थी कि जब रिजर्व के ऊपर टैक्सेशन की बात हो रही थी कि बहुत सारी कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी थी, और उस ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के नतीजे में इनका प्लान था कि वो बोनस शेयर इशू कर देंगे, और अकॉर्डिंगली बोनस शेयर टैक्स से बच जाता। तो गवर्नमेंट को हर वक्त हवा लग जाती है चीज़ों की, और उनको भी अंदाज़ा होता है what is to be going on when something is planned and something is in the open air। जो सीक्रेट नहीं होता, ओपन सीक्रेट हो जाता है, तो उसके नतीजे में रिपरकशंस भी होती हैं।
द मोस्ट एक्सट्रीम थिंग जो इस दफा बजट में आई है, जो री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल exceeding 50,000 in a single day at the rate of 0.6% is reintroduced. लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि ये उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो नॉन ATL वाले लोग हैं. अकॉर्डिंगली ऑन द वन हैंड इट इज अ वेरी गुड थिंग कि इससे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इजाफा होगा, रिटर्न फाइलर में इजाफा होगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स अ चैलेंज टू द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर ने कोशिश की थी कि इसको हटवाया जाए, और ख़तरा इस बात का है कि कल सैटरडे है, बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो कुछ ब्रांचेस खुली हुई होंगी, तो ख़तरा इस बात का है कि बहुत सारे लोग टिल 30th अपना बहुत सारा कैश जो नॉन ATL वाले हैं वो विड्रॉ करेंगे, और मे बी पॉसिबल कि बजट आने तक ये ATL वालों के भी ऊपर लग जाए. लेकिन ये बहुत बड़ा झटका होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपोनेंट जो हैं बहुत सारे खड़े हो जाएं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक के. और हमें अंदाजा होगा थोड़े दिनों में कि जब बैंक से साइफनिंग ऑफ मनी शुरू हो जाएगी, जो इससे पहले भी होती रही है. वी हैव सीन सेवरल पीपल जिनके कई कई ATM कार्ड होते हैं तो रिड्यूस देयर लेवल ऑफ विड्रॉल पर डे बिलो 50,000. कई बिजनेसमैन भी होते हैं जो इस किस्म के अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स अपने कई रिश्तेदारों के एम्प्लॉइज के नाम पे मेंटेन कर रहे होते हैं. ATM उनके कंट्रोल में होता है, चेकबुक उनके कंट्रोल में होती है. ऑल्दो इट्स अ वेरी रिस्की एरिया. फिर इसके बाद इसके नतीजे में कैश इकोनॉमी जनरेट होती है, जो कि बड़ा नुकसानदेह चीज़ है. इसी तरह से एक अच्छी चीज़ इफेक्टिवली है कि एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर इंट्रोड्यूस, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जो फॉरेनर जो है आएगा वो भी टैक्स देगा, फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर जो होगा वो. और ज़ाहिर है आजकल चाइना से और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो इसके एम्बिट में अब आएंगे और इसके नतीजे में इनकम बढ़ेगी, सिवाय इसके कि वो भी कॉस्ट लोड कर दें अपने सर्विस एक्वायरर को. तो उस सूरत में ज़ाहिर लोड सारा हमारी इंडस्ट्री पे होगा. और ज़ाहिर जब भी टैक्स लगता है, चाहे डायरेक्ट लगे चाहे इनडायरेक्ट लगे, अल्टीमेटली वो इनडायरेक्ट की शक्ल में कंज्यूमर की तरफ चला जाता है. ये एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपकी आसानी के लिए एग्जिस्टिंग विदहोल्डिंग टैक्स एंड प्रपोज विदहोल्डिंग टैक्स बताए गए हैं, और जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स हैं, जो टैक्सेबल रेट्स हैं, वो इसको कंपेयर किया गया है, और फाइलर और नॉन फाइलर के पर्सपेक्टिव से भी बात की गई है. इसमें एक अच्छी चीज आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के मिनिमम टैक्स 1% कर दिया गया है, लेकिन इसकी डाउनसाइड एक और भी है दूसरी जगह पे सुपर टैक्स में, कि जो हम थोड़ी देर बाद और अलग वीडियो में उसको गुफ्तगू करेंगे. इसके अलावा इंपोर्ट स्टेज के ऊपर भी रेट बढ़ा दिया गया, 6%, 5.5 से 6% कर दिया गया, जो शेड्यूल 3 में पार्ट 3 में आते हैं. कैश विड्रॉल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, प्रपोज पहले नहीं था. फिर इस तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर थोड़ी देर पहले हमने कवर किया, इसी तरह से कवर किया, और दीगर रेट्स को भी हमने थोड़ी देर पहले जो 153 के हैं वो सारे कवर किए. थोड़ी देर के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है, उसमें भी चेंजेस आई हैं, तकरीबन मिलती जुलती चेंजेस हैं, लेकिन उसको जो आज 3 बजे जो 5 to 5 PM जो टैक्स एक्सेलेंस की तरफ से और मीमन प्रोफेशनल फोरम और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम और कॉमिक्स और 786 टैक्स की तरफ से जो ये प्रोग्राम अरेंज हो रहा है, वो आप काइंडली ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद एरिया में मालूमात हासिल हो. और हमारा जो टैक्स एक्सेलेंस का यूट्यूब चैनल है उसको जो है सब अर्जेंट मीटिंग प्लान करनी हो तो अंसल साहब है, उनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं. With these words, thank you very much and Allah Hafiz. Take care.
इसी वाला आया था ना। Auzubillahi minash shaitanir rajim. This is sound testing. Sound मेरा ऑन है, इधर से रिएक्ट हो रहा है। जब आपको काम में डिस्टर्बेंस होगी या 20-15 मिनट का है तो मॉनिटर दो दो चीजें आप मैनेज कर लेंगे। साउंड का आप ये रखना होगा, अपने पास रख लें ताकि आप साउंड कंट्रोल कर। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग, साउंड टेस्टिंग, परफेक्ट परफेक्ट। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Let's start the proceeding in the name of Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहे, हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये चारों की चारों खुसूसियात हैं। अगर नहीं हैं तो हमें फिक्र करनी चाहिए। With these initial thoughts, आज के प्रोग्राम का मकसद आपको जो हमारा होने वाला वर्कशॉप है, 1 दिन का डिटेल्ड इन डेप्थ वर्कशॉप, उसके बारे में ब्रीफिंग देना है कि इसमें और सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस आपने जो अटेंड की हैं या कोई और बजट के सिलसिले में वर्कशॉप अटेंड किया है, हमने एनालिसिस की है उन तमाम वर्कशॉप की और या सेमिनार्स की और उस कॉन्फ्रेंस की
or in some of the cases we were a part of as a participant or as a panelist. तो accordingly हमें अंदाजा है कि आपके लिए आपने कितना पाया उसके अंदर, और जो बजट हमारा होने वाला वर्कशॉप है इसके अंदर आप क्या हासिल कर सकते हैं। ये आज का असल मकसद है, और आपको एनालाइज करके बताना है कि हाउ इट इज पे बैक गारंटीड इफेक्टिवली, कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल में पता चलेंगी। और इस सिलसिले में हिस्टोरिकली भी अल्लाह का शुक्र है कि जो भी फर्द वर्कशॉप अटेंड करके गया है ही अप्रिशिएटेड दैट। और आगे चल के हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। It's not advisable to share myself, okay, who am I, लेकिन you can run through this slide so that you can understand who is heading the workshop and leading the workshop, and had worked as a team leader under which several professionals worked to finalize the material which will be discussed in the workshop. With this portfolio, you will be able to get insight of almost each and every item. And since I have already told you that I have also attended workshops and seminars and conferences, accordingly will be in a better position to cover all those matters were discussed in either of these. It's important for the professionals and inevitable for the commerce professionals especially to understand the aspect of each and every aspect of the budget owing to high tax burden. And in this budget, there are several new provisions as well as there are several amendments and high tax areas, which has to be in your fingertips, which is necessary for your entity to take the full advantage of any favorable provision and avoid future pitfalls. So far as the coverage is concerned, it will cover income tax, federal sales tax, provincial sales taxes, federal excise duty, relevant notification and case laws and clarifications, and its effect on the corporate sector, AOP, and individuals. Could your good self have a time to read and understand more than 1,000 pages in the finance bill related documents? Big three means here Ferguson, EYI, and KPMG, and M3 means Yusuf Adil, Tola, and Sheikh Mufti. Will you be able to go through all these documents and reach to some conclusion? What we have done based on the discussions with them and having gone through all these material, have prepared our own document wherein we will be involving professionals as well to explain much more than those what is written in these commentaries. Have you got answers, solutions to issues raised to your question in the seminars, conference, and even workshops of earlier year and current year? I hope your reply will be at least about 75% no. I repeat, about 75% no, because of a lot of people are sitting in the conferences, seminars, and certain workshops. However, in our case, the number of participants will be limited, and you'll be able to raise question and get answer to 99% of the cases, and maybe even 100%. Thank you.
If no or find difficulty, you may attend the day-long in-depth workshop with main speaker as myself and learned professional panelists. And there will be ample time to respond to your queries. These are the professionals which are likely to be the professionals which are likely to be in the panel discussions. Depending upon the number of participants we will be able to get, and we are hopeful that on 20th, actually, inadvertently 22 and 23 is written. Actually, rather, so far as the other cities are concerned, it's 22 and 23, but our main workshop will be on 20th. So it's better to register for Karachi workshop. And if not, then other cities. But practically, since it's a global village, it is important to understand the things on 20th so that you will be able to get maximum insight into each and every item, which are over 100 so far, and provincial budget will add on to these items. In order to reap the benefits, it's important and modification of the tax system of your entity and updation of your knowledge base. It's important to register today or maximum Monday, because otherwise we'll not be able to add other, except for the online cases. The physical people has the last day to register, preferably today and maximum by Monday. However, online people can register latest by evening of Monday, or maybe some people in the morning, because we have to send you the soft copy thereof. Now let's see what are the other advantages. How much will the amendment affect on various accounting and tax provisions, past, current, and future? How much will the amendment affect on various accounting tax provisions, past, current, and future? You have to see whether the cost of doing business will increase or decrease, and to what extent. And apparently there is a high increase in cost of doing business. However, it is important to understand each and every area. It's worthwhile to note that several suppliers lodge your purchase department that owing to budget, they've increased the prices. To some extent, it is okay, but abnormal price increase in any item, it should not be acceptable, owing to the fact that you must know each and every individual item, which is the base material for the finished product supplied to you for your own usage. So it's important to understand each and every item of the budget in detail. Moreover, in this competitive world, it's important that owing to the increase in cost of doing business, you may have to increase in most of the cases, and in few cases, you may have to decrease the selling prices. But how much it's important, it's only possible if you account for each and every item while revising your selling price based on understanding each and every amendment in detail. And naturally, it's not only the cost, not only the selling price. In aggregate, the whole budget of the entity has to be updated. If you have a good planning and you have a good budget making process, then upcoming budget, you have to keep in mind each and everything. And not only this,
there may be upcoming mini budgets as well. Accordingly, it is better to get our commentary services, updating services, and daily news clipping as well. And we will be able to give some discount whosoever join our workshop, inshallah. There is a effect on salary taxation as well. Hence, some payroll and HR people may be interested to look into the relevant parts of the program. And we will be doing separate advanced taxation program for this purposes. Naturally, you have to guide IT department as well. Hence, you must be clearly understanding each and every amendment so that you should be able to guide the IT department to change the system so that it can run through. They can test run before 30th June, and thereafter a little change would be required. But test run is important from between 20 and onwards. If we see the post-budget document, it's about 120-page document with an amendment of 130 total amendments. And the total amendments so far as the commentary contains 60 pages that lead to over 1,000 pages that we were talking earlier. And if we compare the other workshops, seminar and conferences with our one-day workshop, originally it was planned for 2 days, and thereafter we have changed it to 1 day. Accordingly, there will be a little change in the numbers which we have presented. The net presentation hour would be around 8 as compared to 4 and 5 in other cases. Loss coverage will be 9, no change here, vis-a-vis other seminars where 4 laws were covered which were federal. We will be covering provincial 5 areas as well. What we are expecting so far as the provincial budgets are concerned, there are likely to be 80 plus amendments therein, and those have not been covered so far in any of the seminar, conferences, and workshops. So far as the federal amendment coverage is concerned, there are around 220 amendments as compared to about 60, which has been covered in tax seminars and conferences, while we expect about 150 would have been covered owing to less time spent in the workshop, because the other entity workshop were either between 5 to 6 hours, and our workshop will be from 9 a.m. to 6 p.m. So we will have a more time to discuss all the amendments. Inshallah, Q&A is concerned, we expect about 3 to 4 hours as compared to 1 to 1.5 hour in other people who did the job. Q&A quantity we are expecting about 50, estimated 15 Q&A. So far the provincial laws are concerned, we expect to cover 20 amendments for Q&A, 80 amendments and 20 Q&A there against. Since other people have not covered provincial areas, so they could not handle, and they had no time to handle, because at that time there were no provincial laws. And by 20th, there will be all the provincial laws, maybe except one. These are the some of the clicks of our Karachi, Lahore, and Islamabad workshop, which is also in our flyer.
These are the clicks of the group photos and the high-level professionals who earlier came in our workshop to respond to the queries at a high level, and wherein you can also confirm the day's technical issues. Thank you. So far as the workshop dates are concerned, in Karachi it is on 20th June, Lahore on 22 June, and in Islamabad 23rd June, inshallah. It will be from 9 a.m. online. Both options are available. And at the last moment, ability, if you can check, if you would like to change from physical to online due to some emergency or traffic congestion or far-flung area. But for Lahore and Islamabad, we will also suggest to attend online so that you can get the knowledge as early as possible and implement the same in your IT and other departments. So far as the pricing is concerned, you have all options available, either to attend only income tax, that is direct tax, or attend indirect taxes, or attend panel discussion or a final discussion. If you wish to attend all these areas, then you will be able to get bulk discount as well, and accordingly net price is accordingly low if you go through all the areas, so that we are extending discount for today only to get early bird discount, and thereafter it will be difficult for us to give you the same, as we have to arrange hotels, a specific seat for you, inshallah. So far as the remarks of other people are concerned regarding our workshop, it states by different people, it was amazing presentation, well prepared, real money back guarantee. Thanks. As I told you earlier, excellent session, spot on every aspect, very useful to even specific need of each participant, since we have a low number of participants, so that accordingly we are able to touch upon each and every person and immediately respond to their questions. Generally, half an hour, there will, after every half an hour, there is a Q&A session, or in certain cases, for a new particular section, immediately we discuss in detail its subsections, as well as at the end, the whole section. Mr. Dash and Dash understand the technical need of the professionals and deliver complex tax amendments with utmost simplicity. पाकिस्तान के लॉस जब बनते हैं तो तारें उलझी हुई होती हैं और हम उनको सीधा स्ट्रेट करके दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. The facilitator and the panelists did a commendable job in sharing all necessary information. Relevant and practical, a must attend workshop for all the professionals. Who should not miss are the finance directors, CFOs, other finance executives and officials, tax managers, internal and external auditors, business advisors and investment advisors, and all those who are involved in either tax planning, budgeting, audits, implementation, and compliance work. With these words, last but not the least, I would recommend to watch several videos about the workshop who has been recorded so far as the participant and panelists are concerned. I would recommend to look into those videos as well. We will send a link to you, and you can contact our Mr. Amsal or Hasnain at our office
whose contact numbers have been given in the WhatsApp sent to you, an email sent to you, and emails and WhatsApp you are getting from time to time, or at the number from where you are getting WhatsApp. With these words, thank you very much and Allah Hafiz. Take care. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि यही वाली जो वीडियो है आप तक रिकॉर्ड हो गई है, तो आप इसको सुन सकें फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. थोड़ी देर में आपको दोबारा से जीरो लेवल से ये स्टार्ट हो जाएगी. वी आर जस्ट रीसेटिंग, आवर टीम इज रीसेटिंग. थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करें काइंडली. थैंक यू.